हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है ब्रह्मा पदार्था कृष्णा's हार्ट इज एन एंशियंट आर्क रिएक्टर मिस्ट्री ऑफ पुरी जगन्नाथ टेम्पल। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं वो क्या शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। Hey guys, about 5 years ago in 2015, on June 15th at 12 o'clock midnight, something very strange happened in Jagannath temple at Puri. Oh. This event made all historians turn their heads and wonder what is happening in this small town in India. Electricity was shut down not only in the temple area but in the entire town of Puri. Why? Because Krishna's heart was being removed from the main idol of Jagannath's temple and was being placed in another idol. No, I don't mean Krishna's heart in a spiritual or mystical way. I mean it physically. Krishna's actual heart is preserved there. But how can a heart be preserved in original condition for 5,000 years? Because it's a very advanced ancient device. It's not made of flesh and muscle. And people say it can generate power. It starts to vibrate if exposed to light, not just sunlight, any form of light. This is why electricity was shut down in the entire town. The people who touched this heart had to wear thick, heavy gloves, and they also had to wear blindfolds to make sure they do not lay ice on it. Of course, all this sounds strange, but it is true, and we may be looking at evidence of very advanced ancient technology. First, let's look at Krishna's death, which is a mystery by itself. Today, many people do not know about Krishna's death, but ancient sources clearly record his death. Around 3102 BC, roughly 5,000 years ago, Krishna was killed by a hunter in a forest. This was an accident because the hunter was trying to kill a deer. Krishna dies and his body was cremated. It was ritually burnt. But even though Krishna's body was burnt, his heart did not burn at all. It looked like a lump of solid metal with no damage. When the hunter picked up this heart, it vibrated. It was not made of flesh and blood. It was made of a strange artificial material. And I suspect this is some type of electrical device. Think about this. Modern day pacemakers, artificial heart, they are all basically electrical devices. Remember, Krishna was not human. He was superhuman. He was a god. There is clear evidence of ancient technology during his time. They were using electricity. They were using batteries, which I have already demonstrated in a previous video. They were capable of genetic modification, and Krishna's own brother, Balarama, was a test tube baby. This is clearly recorded in ancient Indian texts. So the hunter tried to burn this heart again, but it was impossible to burn this heart. And it started to emit a strange vibrating sound. So the hunter realized it was some special device. So he took this heart and tried to sell it because it looked very strange. So he traveled across India, but no one would touch it. And finally he gave up and put it on a wooden plank and left it in a river. And it was picked up in the ancient city of Puri. When the king of Puri found out it was Krishna's heart, he decided to make an idol and put his heart inside this idol.
This idol is the Jagannath idol in the Puri temple. Inside the idol, the heart of Krishna is still there. This heart is called Brahma Padartha or Divya Padartha, which means divine material. But here's the weird part. Almost all main idols in Hindu temples are made of metal or stone. But this idol is made of wood. You know why? Because it is said that Krishna's heart can electrocute you. It gives electric shocks even today. And this is the reason why the Jagannath idol is not made of metal or stone. Because metals and most stones have high conductivity. But wood is a poor conductor of electricity. The statue itself looks incredibly strange. It's very different than most other statues of Hindu gods. It has these huge eyeballs with very little other features, and it's a massive statue, okay? And Jagannath means the Lord of the universe. Inside the wooden statue, there's a fist-sized chamber in the center, which has the heart. Something else is also strange. The priests have to change the entire idol every 12 years. They have to remove the statue and replace it with a completely new wooden statue. Why? Because the heart slowly damages the wood and weakens the statue. It disintegrates the wood. How does it damage the wood? About 50 years ago, one person is said to have actually seen this heart, and he reported that it was leaking a silvery liquid, which is why the statues get damaged and have to be replaced every 12 years. We can only assume that the device contains mercury or mercury cell or something like that. He claimed that the heart actually began rotating like a chakra when it was exposed to light and vibrated loudly. He said that it was made of an alloy called Ashtadhatu. Ashtadhatu is octoalloy, made of 8 different metals. After this news spread, a new rule was created that everybody should be blindfolded when this heart is being handled, so nobody can disclose its feature to the public. The eyewitness account is so interesting because of its similarity to the arc reactor of Iron Man, right? Both Iron Man and Krishna have these devices on their chests. Both look circular with spinning things. Both seem to be generating power. I know some of you might think the arc reactor is completely fictional, but MIT is building a compact fusion reactor, and you're looking at the computerized model of the reactor. It would look like the chakra or the arc reactor from the top view, but in the front view, it also looks somewhat like a heart. It has multiple chambers, valve-like tubings. Scientists know that this portable nuclear machine is the future. MIT में. The question is, was it also the past? The temple authorities officially agree they use gloves to handle the heart. They agree that this device is not a metaphysical or philosophical thing. It's an actual physical thing that must be removed from the old idol and placed inside the chamber of the new idol. They have to turn off the electricity and turn off all the lights and do the transfer in complete darkness to prevent it from getting activated. This means that this device is powered by light. I know we always think of solar energy, but really the technology is not far away where we can tap the power from any light source. We already have this technology in the baby stages, okay? And this is why the entire place must be shut down. Because if there's any light, then there is the risk of this device getting activated.
What is it? We don't know. It is definitely some kind of a rotor mechanism, a turbine, a generator, something like that. We know that Lord Krishna was a master of rotor mechanism, okay? He used a weapon called chakra, and this is a very, very advanced device. There are models preserved in temples which are quite ancient. This preliminary model that you see here is from the 11th century. It is 1,000 years old. Ooh. See how complex it is. And this is just a basic model of the chakra. And the chakra was also powered by light. And if you go to the Jagannath temple in Puri, you will find a model chakra on top of the temple tower. Oh, yeah. Of course, there's absolutely no filming allowed inside the temple, so I cannot show you any footage from this temple. So there's no way to really confirm what the heart looks like, what it is made of. All this information is from locals, from temple authorities, and the internet. But I hope someday the secret of Krishna's heart is revealed and we get to see this ancient device. Yeah. What do you think? Was Lord Krishna's heart an advanced device implanted inside his body? Or is it a simple object? तो वीडियो सच्ची में कमाल का था, पर मैं अब दोनों साइड से बात करूंगी। एक साइड वो है जो थोड़ी बुरी भी लग सकती है। तो मेरी एक साइड बीच में वीडियो में तब मैं ये सोच रही थी, पहले तो मैं सब बिलीव कर रही थी, फिर एकदम से मेरे को एक थॉट आया। थॉट ये था कि ये कह रहे हैं कि इसको लाइट में नहीं रख सकते, अगर लाइट में रखा तो ये शायद एक्टिवेट हो जाता है और इसमें से इनको कोई लिक्विड जो होता है सिल्वरी लिक्विड दिख रहा है और ऐसी बातें की। तब मैं उसके बाद सोचा जो वो ये था कि जब वो जिसने हंटर ने उनको मारा था वो इतनी देर से इसी चीज को लेके घूम रहा था। हंटर तो कोई इतना समझदार है नहीं, तो वो तो लाइट में भी लेके जा रहा था, उस टाइम सब जगह लेके जाता। फिर उसने जैसे बताया कि नदी में ऊपर उसके ऊपर रख के छोड़ दिया था और फिर ये पुरी तक पहुंचा। तो इतने टाइम में क्या ये रिएक्टर चला नहीं? तो वो मुझे बात नहीं समझ में आई कि तब तो कुछ हुआ नहीं। फिर वो जब उन्होंने मूर्ति में रखा है और ये सब हुआ है तब वो बोल रहे हैं कि तब कि सब डार्क में रहना चाहिए। तो उस टाइम तो वो लाइट में रहा था, तो वो मुझे थोड़ा जो है ना बात अजीब सी फील हो रही थी। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि जब राजा के पास गया उनको पता चला कि कृष्ण जी का हार्ट है, तो उन्होंने जो है ये मंदिर बनाया और उस हार्ट को ऐसे वुडन जो है उसके अंदर। अब उनको कैसे पता था कि भाई ये रिएक्ट करता है, इसको वुड के अंदर रखना चाहिए या ये सब, वो भी मुझे नहीं समझ में आया। तो वो जो पार्ट थे ना उससे मुझे थोड़ा थोड़ा सा डाउट होने लगा। पर जो बाकी चीज अब दूसरे एंगल से सोचो तो फिर लगता है कि नहीं, इसमें जरूर कुछ है। और वो ये है कि जैसे आपने वो मूवी देखी कि हार्ट लगता है, लोगों के पैसिफायर लगते हैं, वैसा ही वो ऐसी कोई चीज है और सिमिलर लग रही है। फिर उन्होंने ये MIT की बात कर ली कि वो भी ऐसा कुछ बना रहे हैं जिसकी शेप और चीजें बिल्कुल हार्ट टाइप ही लग रही हैं, तो उससे भी लगता है कि कोई बात है। और फिर ये कह रहे हैं कि वुड जो है बाबा चेंज करके फिर दूसरी करनी पड़ती है। तो वो मुझे लगा कि हो, क्योंकि हर 12 साल बाद हो रहा है तो इसका मतलब कुछ होता है उस वुड में इफेक्ट। अगर रेडिएशंस है या कुछ है तो वो ऑब्वियसली जो जिस चीज के अंदर रखा हुआ है उसको वो करेगी इफेक्ट। तो उसको प्रोटेक्टेड रखने के लिए आपको फिर नया बनाना पड़ेगा। तो वो भी मुझे फिर लगा कि कुछ बात है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे उसने किसी ने खोला आंख और उसको वो दिखा तो उसने ये बात बताई, तो उससे भी लगा कोई बात है। तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये बात तो है कि कुछ तो है, अब क्या है समझ नहीं आ रहा। और ये तो बस अगर कोई रिसर्च कर सके, अगर अलाउड होता तो होता। पर मुझे फिर एक दिमाग में एक और बात आई, वो ये थी कि हो सकता है ऐसी ही सिमिलर चीजें बाहर भी मिली हो, जैसे US में भी मिली हो, और उसी चीजों को स्टडी करके ऐसी चीजें बन रही हो। अब हमें क्या पता कि खाली इंडिया में ही ना हो, कहीं और से भी आए हो, कोई एलियंस आए हो जिनका सिमिलर हो, इस टाइप का, एग्जैक्ट ना हो पर सिमिलर हो। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने और भी देखी है कि एलियन शिप्स मिली हैं, ये सब मिला है। अब
मैं तो कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बिलीव करूँ नहीं करूँ। तो आप शेयर करना अपने थॉट्स। राइट। अगर आप भगवत गीता को देखते हैं तो उसमें तो ये है कि भगवान एक पावरफुल एंटिटी हैं जिन्होंने हमें बनाया है, और वो एंटिटी कोई भी शेप ले सकते हैं। तो वो बहुत सुपीरियर बात हो रही है एक एंटिटी की। एक आप कहते हैं परमात्मा की आत्मा है और परमात्मा है, परमात्मा की बात हो रही है जो एक लाइफ फोर्स है। वो लाइफ फोर्स कभी बढ़ती नहीं है, हमेशा रहती है। वो उसने हमें क्रिएट किया है और को पूरा सिस्टम पूरे यूनिवर्स को रन हो रहा है, राइट। अब यहाँ से सडनली आप कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वो एक मतलब सुपर ह्यूमन के तरीके के थे, कि वो एक ह्यूमन बीइंग के तरीके थे, मगर अंदर एक आयरन की चीज़ बनी हुई थी, एक उनके अंदर डिवाइस था। मगर भगवत गीता के हिसाब से कोई डिवाइस नहीं था। भगवान एक सुपर आत्मा है, एंटिटी है, वो कोई भी रूप ले सकते हैं, कुछ भी। तो वो बहुत हायर चीज़ की बात कर रहे हैं। एक आप समझ सकते हैं एनर्जी, वो एनर्जी कोई भी शेप ले सकती है, कुछ भी कर सकती है, ह्यूमन बीइंग के रूप में आ सकती है, काम कर सकती है। उसको कोई डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस भगवान ने इस अर्थ को बनाया है, उस भगवान ने पूरे यूनिवर्स को बनाया है। वो भगवान को क्यों चाहिए एक डिवाइस अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, राइट। कि मतलब जिस भगवान ने हर चीज क्रिएटिविटी बनाई है, जिसने मतलब हम तो इतने छोटे से हैं, आप पूरा यूनिवर्स कितना ह्यूज है, उस क्रिएशन को एक मटेरियल चीज की जिसे आप टच करते हैं जरूरत नहीं है सुपर ह्यूमन बनने के लिए। ये मेरा थॉट है। और इसमें भी है, अगर ये वाकई ही किसी ने देखा था, तो अगर मान लो आपको कोई बहुत ही अद्भुत चीज़ मिलती है तो आप तो लोगों को दिखाना चाहिए फिर आपको कि बहुत ही अद्भुत चीज़ मिली है, ये देखिए। जिसने देखा था उसको देखने के लिए लाइट चाहिए होगी, तो जब उसने देखा और उसे कुछ नहीं हुआ तो और लोग भी देख सकते हैं, राइट। अगर आप देख तभी सकते हैं अगर लाइट की रिफ्लेक्शन है। अंधेरे में तो आप देख नहीं सकते। आप अंधेरे में देख सकते हैं नहीं, हो सकता है ग्लो करती हो, कुछ करता हो। तो वो बात तो अगर वो है तो उन्होंने बोलना चाहिए। तो अगर ग्लो करती है अंधेरे में तो आपको अंधेरे में रख देना चाहिए और सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो जाएं और अंधेरे में उस ग्लोइंग चीज को देखें, राइट। तो अगर कोई महान चीज मिलती है तो उसे छुपाने का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से तो उस महान चीज को देखिए कि भगवान, अभी ये भगवान का हार्ट वाकई अगर है तो मैं तो बिलीव ये करता हूँ कि भगवान उससे भी पावरफुल है। मेरा तो बिलीफ नहीं है ये कि भगवान कोई एक यंत्र, एक डिवाइस का यूज करेंगे अपने आप को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए। भगवान तो परमात्मा है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उन्होंने इन सब चीजों को बनाया। तो मेरा ये थॉट है। आपका क्या थॉट है बताइए। हाँ, पर हमने कई वीडियोस ऐसे भी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि इतने बड़े बड़े जो टेम्पल्स बने, इम्पॉसिबल था बनना, वो कैसे बन गए। हाँ, तो कोई उसकी ये है कि कोई हमसे पावरफुल लाइफ फॉर्म है जो किसी और प्लेनेट पे रहती है, मगर वो भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक और लाइफ फॉर्म है, हमसे ज्यादा एडवांस्ड है। हम अब हमारे को देखिए, जो हमारी जिंदगी चल रही है वैसे किसी और प्लेनेट में कोई और अभी केवमैन की तरह जी रहा होगा, राइट। तो ऐसे जगह जगह लाइफ है, हर एक लाइफ की प्रोग्रेशन हो रही है। और भगवत गीता में भी कहा है कि आप किस प्लेनेट पे जाते हैं मरने के बाद वो डिटरमिन होता है। तो बहुत सारे प्लेनेट्स हैं, मगर वहां पर भी उसे भगवान नहीं कह सकते। भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरे प्लेनेट में आओ, मगर वो भगवान, वहां सब भगवान नहीं है, भगवान का प्लेनेट है वो। जैसे कहते हैं कि वहां दूध की नदियां हैं। ये सब हम कहाँ बताएंगे? मोमजिला चैनल में, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, ये कर रहे हैं अपने भगवत गीता के हर एक पार्ट को प्रॉपर। हाँ, जब वो चैप्टर आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे भगवत गीता के। तो अगर आपने वहाँ सब मोमजिला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो, क्योंकि कोशिश होती है कि एवरी वीक कुछ ना कुछ भगवत गीता से रिलेटेड जो है सीक्वेंस में आपको वो चैप्टर्स जो है वो पढ़ के और एक्सप्लेन करें, तो बहुत ही अच्छा होगा। और जब ये चैप्टर आएगा तो और मतलब इनलाइटमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने थॉट्स लिखना कि आपको क्या लगता है, आपको इस वीडियो से क्या पता चल रहा है, आप क्या फील कर रहे हो इसके बारे में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।